and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades in some cases, have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honourable Speaker, Sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last 2 budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing. As a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs, and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific sector-specific proposals. Electronics. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items. Gems and jewellery. To give a boost to the gems and jewellery sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewellery through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year to disincentivize import of undervalued imitation jewellery. The customs duty on imitation jewellery is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining, are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs. Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap
last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. Certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings, and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear, and other goods. Honourable Speaker, sir, duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of ₹2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs, tariff and customs law, the details of which are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Vitt Videk 2020, Nirmala Sitharaman ji. Sir, item number 3, Finance Bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
Those in favor, please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. We all know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it. There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong. To know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists, join me, Dr. Amrish Mittal, on Healthy India, only on SANSAD TV. No force can stop the change whose time has come. An emerging global power in a fast-changing geopolitical environment. With a goal to modernize, to showcase our defenders who are always battle-ready. Watch our special presentations featuring India's defense forces and their capabilities in The Defenders, only on SANSAD TV. Nature and You, the Environment Series, aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on SANSAD TV. Those in favor, please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विशाल दहिया। Thank you, Preeti. So finally, we have heard the budget speech from Finance Minister Nirmala Sitharaman, the second paperless budget which has been presented by this government after the last year. We'll take you through all the key highlights, key elements as well, and we'll try and make you understand as to what exactly has the budget said and what does it mean for everyone in the country. But let's first begin with some of the key highlights. Preeti? बिल्कुल, ये जो तमाम बड़ी और मुख्य बातें हैं वो इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां दी जाएंगी, ये बात बजट में सामने आई है। इसके अलावा जो अहम घोषणाएं हैं, एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद का ऐलान हुआ है। साथ ही आईटीआई में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। छठी जो मुख्य बात है वो ये है कि सरकारी स्कूलों में ई विद्या के तहत 200 चैनल्स का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा एलआईसी का आईपीओ अब जल्द आएगा।
साथ ही 100 साल के ढांचागत निर्माण पर सरकार का अब फोकस रहने वाला है। इसके अलावा 2022-23 में नेशनल हाईवे नेटवर्क तक जो इसका विस्तार है उसको करने की बात कही जा रही है। क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट जो है वो सरकार की प्राथमिकताओं में सामने आई है। इस बजट के जरिए एक बार फिर 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। जो नदियों को आपस में जोड़ने की बात तमाम पिछले काफी समय से हम सुन रहे हैं, उसमें 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। ऑर्गेनिक खेती को लगातार बढ़ावा देने की बात कही जा रही थी। एक बार फिर बजट में ये बात सामने आई है। रसायन मुक्त जो प्राकृतिक खेती है उसे लेकर आगे बढ़ा जाएगा। तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अभियान चलाने की बात है और एमएसपी के तहत रिकॉर्ड खरीदारी, किसानों को डिजिटल सर्विस दी जाएगी। उद्योगों, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा बजट का 25% दिया जाएगा। भारत नेट परियोजना 2025 तक पूरे होने की संभावना है। इसके अलावा शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात बजट में कही गई है। अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से देश को फायदा हुआ है। गरीबों के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा नए घरों के निर्माण के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। साथ ही अगले 5 साल में एमएसएमई सेक्टर को 6,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। 2022-23 में चिप वाले ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज को देश में अनुमति दी जाएगी। ये भी बड़ी बात है जो सामने आई है। 2022-23 बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय जीडीपी का 2.9% होगा। तो ये तमाम मुख्य बातें हैं जो इस बार बजट में सामने आई हैं और बजट को लेकर चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीएम गति शक्ति योजना को 2 चरणों में पूरा करने की बात कही गई है। शुभमोय भट्टाचार्य जी, कंसल्टिंग एडिटर द बिजनेस स्टैंडर्ड, साथ ही संचित शर्मा, डायरेक्टर AIMIL फार्मा। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह मैं चाहूंगी कि पहले आप बता दें जो बजट की बड़ी बातें जो अभी हमने स्क्रीन पर दिखाई भी हैं, आपके लिहाज में कौन सी ऐसे बड़े पॉइंट्स हैं जो इस बजट में हमारे सामने आए हैं जिनको आप मानते हैं कि ये थोड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होंगे? प्रीति जी, सबसे बड़ा चीज इस बजट में और जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई थी वो था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार कितना व्यय करेंगे। और उस पर वित्त मंत्री ने कहा है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 7 ट्रिलियन 7 लाख करोड़ के तक पहुंच जाएगा, उन्होंने इस पर एक्सीड किया है। शी सेज 7.5 लाख करोड़। ये बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का अभी सख्त जरूरत है पूरे इकोनॉमी में। तो भारत सरकार 2 लाख करोड़ के करीब इजाफा कर रहे हैं अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट में ये बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है क्योंकि पूरे इकोनॉमी का जो हम रोल आउट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोविड से कैसे इसका इफेक्ट सुधरा जाए, उसके लिए ये बहुत बड़ा फिगर है। That's on 2.9% of the GDP if you look at that way. And if you add on the states component, it comes out to be somewhere around 4.1%. 35.4% hike in the capital capex outlay of the GDP. So that means these are like very big numbers, and that is what the economy really needed. So, you know, I was not expecting that there would be any tax concessions. I was not expecting that there will be major changes in, you know, tinkering, because this is not the time for that. The economy needs major repair work coming from the COVID. And that is what this budget was about. So for that, this is a big number. The second big number is that the fiscal deficit, as expected, has therefore, I mean, instead of correcting to 6.8, it's 6.9. The bond markets and others, they will be naturally be annoyed because that means the government will be borrowing more. But that's expected because if you are not going, because that is necessary to finance the expenditure. The government has not raised any taxes as was expected. Now, that's an important point because, after all, the money has to come from somewhere. So and when you're talking about fiscal discipline, you know, keeping the target of 6.4% for the next, financial year shows the intentions of the government to stay on the, fiscal prudence path, despite the setback from the COVID pandemic. Absolutely. So here you have two things. A, that the expenditure is rising. It's going up to 39 lakh crore, 39 trillion rupees, the overall government expenditure.
yet a large part of it is coming from capital expenditure. So that's something very unusual. It never used to happen. It's been happening over the last 2 years, and this year it's a big rise. Okay. And corresponding with that, the fiscal deficit has not been disturbed. So which means the government has essentially just hit it where it's needed. Okay. You would also, I mean, the fine print will also tell you that the subsidy figures for food and for fertilizer, now those are major ones, and those have not been disturbed with that, which means that they continue at pace. We'll come to the other things. We'll come to the nitty-gritties as well, and we'll look at, now we're speaking about how much money is being spent. Where will it be spent? What are the key focus areas? We'll come to that as well, but let's first take an overview from Sanchit here as well. Sanchit, what's your first reaction in terms of taking a look at this particular budget? And let's not forget that the finance minister began her speech by saying that this budget is going to set the foundation for the Amrit Kal, that is from 75 years of independence to 100 years of independence. Yes, definitely. I think the government has been bang on from 75 to 100 years. उसको हम लैंडमार्क मान के चल रहे हैं. And I think आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, उसके लिए इसके अंदर काफी चीजें बताई गई हैं. एंड आई एम वेरी होपफुल विद दिस बजट दैट जो 100 साल की प्रतिमा रखने जा रहे हैं, तो उसमें इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल दिस बजट. दिस इज अ पॉजिटिव बजट आई फील. संचित, मैं फार्मा को लेकर ही स्पेसिफिकली आपसे सवाल करूंगी. हम जानते हैं कि फार्मा को लेकर हमारी स्थिति कितनी बेहतर है पूरी दुनिया के मुकाबले अगर हम बात करें, और अब हमने खास तौर से जो कोविड काल में स्थितियां देखी हैं, इसमें हम अपनी वैक्सीन की अगर बात करें, वो खुद बनाने की बात हो, और बाकी तमाम जो चीजें इस चुनौतियों के बीच अवसर के रूप में सामने आए, और अब ये बजट फार्मा को लेकर जो उम्मीदें थी, क्योंकि हमने देखा शेयर मार्केट में भी जो रहा, वो जिस तरह से उत्साह उसमें भी देखने को मिला, और अब जो घोषणाएं हैं उनमें कौन सी बड़ी बातें आप मानते हैं फार्मा को लेकर? फार्मा को लेके आई फील जैसे आयुर्वेद को हमें बहुत आगे लेके जाना चाहिए. तो वैक्सीन की जो हमारी प्रोडक्शन है वो कैपेबिलिटीज बढ़ी हैं, और हम डेवलप भी कर रहे हैं अपनी इन हाउस मेड इन इंडिया वैक्सीन हैव बीन डेवलप्ड इस कोविड सिनेरियो में, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है फॉर दी हेल्थ के सेक्टर. एंड आई फील आयुर्वेदा इंडस्ट्री इज ऑल्सो लॉट टू कंट्रीब्यूट. जहां पे हमारी ऑर्गेनिक खेती की बात करी है वित्त मंत्री ने कि ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ध्यान दी जाएगा, तो वैसे ही आई फील कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डेवलप हुई थी 2016 में, तो उसके बनने के बाद से लेके अब तक काफी सारे चेंजेस आए हैं, जहां पे आयुर्वेदिक इंडस्ट्री ने भी काफी मदद दी है फार्मा सेक्टर को. और आई थिंक आत्मनिर्भर भारत में जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि 100 साल तक जो नेक्स्ट वी आर टचिंग 100 ईयर्स, तो उसके अंदर आयुर्वेदा विल प्ले अ की रोल. और उससे आई थिंक जो हमारा डेफिसिट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ का जो डेफिसिट हमारा चल रहा है, आई थिंक आयुर्वेदा इंडस्ट्री को अगर हम ऊपर लेके आएंगे तो उसके अंदर उसमें हमारा एक्सपोर्ट जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो सकते हैं, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल. एंड फार्मा सेक्टर के लिए तो जो ऐलान है वो पॉजिटिव है ही है. जी, वी आर ऑल्सो जॉइंड बाय प्रीति 2 more guests here. Mr. Atul Gupta.